रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, क्योंकि जिंक भी मेटल है तो वो सरफेस हो, तो देन फोटो इलेक्ट्रॉन में बी एमिटेड। तो वही कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन ए जिंक प्लेट इज हीटेड, नहीं हो सकता, irradiated by ultraviolet. So ultraviolet light is very high frequency light, so that is possible. So here question number 30, yani this is the second question of the section E, that case study based question, photoelectric effect उस पर बेस्ड है। It is the phenomenon of emission of electron from a metallic surface when light of a suitable frequency is incident on it. The emitted electrons are called photoelectrons. Nearly all metals exhibit this effect with ultraviolet light, but alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium, etc. show this effect even with visible light. It is an instantaneous process, that is, photoelectrons are emitted as soon as the light is incident on the metal surface. The number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of the incident radiation. The maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from a given metal surface is independent of the intensity of the incident light and depends only on the frequency of the incident light. For a given metal surface, there is a certain minimum value of the frequency of the incident light below which emission of photoelectrons does not occur. So, question 1 first. In a photoelectric experiment, plate current is plotted against anode potential. A part, A and B will have same intensities while B and C will have different frequencies. B part, P and C will have different intensities while A and B will have different frequencies. C part, A and B will have different intensities while B and C will have equal frequencies. D part, B and C will have equal intensities while A and B will have same frequency. Question number part 2. Photoelectrons are emitted when a zinc plate is option A heated, option B hammered, option C irradiated by ultraviolet light, option D subjected to a high pressure. Third part, the threshold frequency for photoelectric effect on sodium corresponds to a wavelength 500 nanometer. Its work function is about part A 4 into 10 to the power minus 19 joule, B 1 joule, C 2 into 10 to the power minus 19 joule, D 3 into 10 to the power minus 19 joule, and fourth, the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt falls on it is 4 electron volt. The stopping potential is A 2 volt, B 4 volt, C 6 volt, D is 10 volt. The or part is the minimum energy required to remove an electron from a substance is called its A work function, B kinetic energy, C stopping potential, D potential energy. For a given metal surface, there is a certain minimum value of the frequency of the incident light below which emission of photoelectrons does not occur. Part 1. In a photoelectric experiment plate, current is plotted against anode potential in the figure
where B and I are plotted for the three metals A, B, C. The options are A and B will have same intensities while B and C will have different frequencies. B and C will have different intensities while A and B will have different frequencies. C option, A and B will have different intensities while B and C will have equal frequencies. Option D, B and C will have equal intensities while A and B will have same frequencies. And the question is, in a photoelectric experiment, plate current is plotted against anode potential. This is the plate current and this is the anode potential. Now A and B will have same intensity. A and B are having same intensity. This is wrong. This is intensity 1, this is intensity 2. And B and C have different frequency. B and C have different frequency. It is absolutely correct. So this is nu 1, this is nu 1, this is nu 2. Here intensity 1, intensity 2. So first part is not correct. B part is B and C will have different intensities. B and C are having different things. Again it is wrong. While A and B will have different. A and B will have different frequency. ये भी गलत है. C, A and B will have different intensities. A and B have different intensities. Correct. While B and C will have equal frequency. While B and C will have equal frequency. This is not correct. So D is B and C will have equal intensities and A and B have same frequency. So here the correct answer is B. देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. तो इसका इन A और B के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. Therefore the frequency of A and B is same. So nu A is equal to nu B. The frequency nu B is not equals to nu C. Similarly, frequency A is not equal to nu C. So the stopping potential is different for them because V02 is not equal to V01. वो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है. अब इंटेंसिटी में क्या है? Intensity of A is not equal to B and C, whereas the intensity of B and C is same. So the option D says B and C have equal intensity. So B और C की equal intensity है and A and B are having. Question number part 2. Photoelectrons are emitted when a zinc plate is option A heated, option B hammered, option C irradiated by ultraviolet light, option D subjected to a high pressure. Option 2, photoelectrons are emitted when a zinc plate is number 1 A heated, हो नहीं सकता. Number 2 hammered, again नहीं हो सकता. C irradiated by ultraviolet light, that is correct. And D is subjected to a high pressure. तो high pressure से कुछ नहीं होता. तो photoelectric effect हमारा क्या है कि it is when a certain suitable high frequency radiation is incident on a metal surface, क्योंकि जिंक भी मेटल है तो वो सरफेस हो तो then photoelectron में be emitted. तो वही कह रहा है कि photoelectrons are emitted when a zinc plate is heated, नहीं हो सकता. Irradiated by ultraviolet, so ultraviolet light is very high frequency light, so that is possible. So here the correct option is C. It is irradiated by ultraviolet light. और D में जो है subject to the high pressure है वो भी possibility नहीं है.
So correct option is सी कि जब सुटेबल यानी अल्ट्रावायलेट लाइट से उसको इंसिडेंट करेंगे जिंक मेटल पे तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिटेड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड पार्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on sodium corresponds to a wavelength 500 nanometer. Its work function is about part A 4 into 10 to the power minus 19 joule, B 1 joule, C 2 into 10 to the power minus 19 joule, D 3 into 10 to the power minus 19 joule. 4 volt. C. Third question is the threshold frequency for photoelectric effect. अब हमने क्या कहा था कि जो सोडियम corresponds to wavelength 500 nanometer. यानी जो वेवलेंथ है माइनस एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज 500 नैनोमीटर. अब जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है C that is already given थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज 500 into 10 to the power minus 9. अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज 500 into 10 to the power पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. सो काइनेटिक एनर्जी is equal to potential energy, then and only then it can stop. 14 हर्ट्ज भी यहाँ पर and the threshold energy यहाँ से आ is रहे h हैं. mu naught. कैथोड से h mu एनोड naught की is तरफ h 6.7 के बराबर इसका रिपल्सिव जो है नेगेटिव एनर्जी आपकी एंड दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल लगा के क्या उसको दोनों बराबर हो जाता है. तो देन they will not be able to minus 20. So that means kinetic That energy is is 4 4 into 10 into kinetic is 4 electron volt 19 minus that is 19 joule. So here the options are Q into the V. stopping potential And here V is what? the work function. This This threshold charge energy is is nothing nothing but but this into is V. work function. So that means So work function is into 4 the charge into of 10 minus 19 4 A into that E is to correct. H. So easy can then B 1 joule, it is not correct. C 2 into 10 to the power minus 19 joule, The the correct correct option is option here. is And D 3 into 10 to the power minus 19 joule, this B is for not correct. correct. So the correct B option part is A. for The third third. part is 2 volt, this is not correct. B is 4 volt, clear That हो is गया. correct. C is 6 लैम्डा volt. नॉट जो है 500 6 volt नैनोमीटर है पूरी नोट एनर्जी निकाला C और मैं for जनरल minus माइनस करके करके उसकी वैल्यू आ And जाती D है 10 volt हो ही नहीं सकता क्योंकि 14 हर्ट्ज. फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी आ गई, कहां से हो वर्क जाएगी? फंक्शन या जो इसलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी correct हमारी है option is B. दैट इज h This is नॉट all ने हमने कैलकुलेट करके ये ऐसे मल्टीप्लाई करके है 614 को करके इसका हमें ये देखो 4 into 10 6 वोल्ट है, यहां से कुछ कम जूल हो आया जाएगा. दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी और work कैलकुलेट function. तो 4 इसमें इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ऑप्शन ए जो है अब वो इस काइनेटिक option एनर्जी है. को रोकने के लिए उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी. थर्ड क्वेश्चन इसलिए इज potential द energy थ्रेशोल्ड हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी फॉर हुई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो गई. अब इसको बोर्ड में सोडियम convert करना corresponds है. to wavelength 4. The maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt falls on it is 4 electron volt. The stopping potential is A 2 volt, B 4 volt, C 6 volt, D is 10 volt. The part 4 of question number 30. The maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy is 6 electron volt. The energy of the photon is 6 electron volt. Falls on it is 4 electron volt. So maximum kinetic energy is 4 electron volt. And this is the energy of the incident photons. The stopping potential is A 2 volt, B 4 volt, C 6 volt, D 10 volt. अब हमने क्या कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी यानी के ई इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट ये पड़ा हुआ है. अब जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, देन एंड ओनली देन इट कैन स्टॉप. जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, इनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर अगर एक रिपल्सिव जो है नेगेटिव एनर्जी आपकी पोटेंशियल की नेगेटिव पोटेंशियल लगा के क्या उसको दोनों बराबर हो जाता है, तो देन दे विल नॉट बी एबल टू कम टू. So that means kinetic energy equal to potential energy. So kinetic energy is 4 electron volt. That is potential energy Q into V. And here V is what? The Q is what? Q is the charge of the electron. So E into V. So that means 4
into the charge of electron equal to 4 into E into V. So E से E cancel हो गया तो potential will be 4 volt. So the correct option is here is B part portion. The B part. Then A part is 2 volt. This is not correct. B is 4 volt. That is absolutely correct. C is 6 volt. No. 6 volt तो उसकी पूरी एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से माइनस करके आएगी. एंड डी 10 वोल्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि फोटोन की एनर्जी 10 नहीं है तो उसकी कहां से हो जाएगी. तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी. फिर से समझ लें, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है. इसका हमें ये देखना है कि भाई ये 6 वोल्ट है, यहां से कुछ कम हो गया होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो गई. अब इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो V विल बी इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E. तो E से कट गया तो ये 4 हो जाएगा. तो दैट इज 4 वोल्ट. तो दिस पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 वोल्ट. ये क्लियर हो गया. द और पार्ट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a substance is called its A work function, B kinetic energy, C stopping potential, D potential energy. अब अभी आपको पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये पढ़ाया था कि जब काइनेटिक एनर्जी है, अभी इक्वेशन लिखी थी h nu minus h nu naught. So that means this threshold energy is the minimum energy supplied to the electron when it is just ready to emit or escape from the metal surface. So this is the minimum energy given to the metal surface or electron so that it just ready to emit. So here he says the minimum energy required to remove an electron from a substance is called its वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इसको फाइन आउट वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज ए वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी. बी काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो उसके बाद आता है, जब उससे ज्यादा हो जाएगी तब निकलेगी. और सी हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वो होगा नहीं. और पोटेंशियल एनर्जी तो नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी है, वो तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए वर्क फंक्शन.